Good morning, dear students. I hope you all are fine and you are doing well at home at study in this pandemic situation. Okay. So today I am going to start a topic that is called again method of integration. Continue with the method of integration and solve few more problems related to this particular topic. My aim is to complete the chapter today. Okay, in today's class, and whatever be the classes I have done, I hope you go through the videos and understand it, and also you have tried your best to solve a few problems related to these particular topics. I have chosen a particular problem that is called integration what x cube plus x plus 1 divided by what x square minus 1. Okay, and in this question you see this particular there is a numerator is what a polynomial of degree 3 and denominator is a polynomial of degree 2, and therefore it is an improper rational polynomial function. To solve an improper rational polynomial function, what we have to do, that is we have divide numerator by denominator first and try to convert into a proper rational polynomial function and then resolve into partial fraction. So here you see I am dividing numerator by denominator. After dividing, I hope you know how to divide this particular process you already got in school level, but one just remind it. First you divide x cube by x square, you are getting x, and then minus 1 into x, you multiply this result is minus x. If you subtract this expression from here, this will be cancelled, and finally this is plus, माइनस कर रहा हो तो ये प्लस हो जाएगी, अल्टीमेटली ट्वाइस एक्स होगा, 1 आके इधर हो जाएगी. तो ये x का पावर कितना है, 1 है, इधर पावर 2 है, तो फिर डिवीजन करने का ज़रूरत नहीं. तो हमें क्या मिल गया है, दिस इज द रिजल्ट, दिस डिवाइड बाय दिस एक्सप्रेशन बिकम्स रिजल्ट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय जिससे डिवाइड किया है उसको लिख लीजिए. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ ए proper rational polynomial function because degree is numerator is 1 and degree of denominator is what, 2. Okay, so here you see I have written this integral is equal to this one, and if you separate the integral you get integration x square by 2 x integration x dx is equal to what, x square by 2, and this is integration twice x plus 1 divided by x plus 1 into x minus 1. I factorize it. Okay, now this particular expression is of the first rule of the partial fraction method. Okay, this is of the type px plus q divided by what, x minus a into what, x minus b. So you can take that is the partial fraction of this particular expression is what, a by x minus a, b by x minus b. So in this case what you will do, you will write twice x plus 1 divided by this is equal to what, a by x minus 1 x plus 1, b by x minus 1, and then take LCM and then take a numerator is equal to numerator, and finally your aim is to find constant a and b, and then putting the value of a and b and take integration on both sides, you will get your integral. You can numbering this particular this one. After finding this, use the relation I equal to, this is your I. Okay, this is your suppose I. Okay, so in this relation you replace this the integral, you will get the final value. Okay, I am not going to solve this particular question in details. Already such type of problems I have solved, so go and continue to solve by yourself. Okay, so let us moving ahead with the next problem of the class. The next question I am going to solve, this is important one. In this problem I use a trick here, so if to just follow my class, the I is equal to integral 1 minus x square by x into 1 minus 2x dx. This is your integral. Okay, so in this integral you see highest power of x in the numerator is what, 2, and highest power of x in the denominator x into twice x is equal to x square. So power are equal. Power are what, equal. So in such cases what we will do, one thing we can do, that we divide this numerator by denominator.
one problem I have solved, that is a short trick I have used. Here I am using another short trick, so I just follow me. You see, this expression becomes what? 1 minus x square by x minus 2x square, or better you write this can be written as minus 2x square plus x. Okay, if you use the rule of division, you see, that is what dividing 1 minus x square by the quantity this one, okay. So this also written like minus x square plus 1, okay. Now dividing minus x square by this term से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर बाई माइनस 2x स्क्वायर, ओके. दोनों कैंसिल होके माइनस माइनस कैंसिल हो, क्या होगा, हाफ होगा कि नहीं. इट विल बी व्हाट, हाफ, ओके, हाफ. तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, एंड इट विल बी सपोज हाफ इंटू एक्स, ओके. सो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी, एंड इट विल बी व्हाट, 1 माइनस हाफ एक्स, 1 माइनस व्हाट, हाफ एक्स. क्लियर, समझ में आ रहा है. तो फाइनली क्या हो रहा है, आप एक चीज़ को देखो, रिजल्ट दिस अल्टीमेटली योर एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई व्हाट, एक्स माइनस 2x स्क्वायर, जो रिजल्ट है ये क्या बन रहा है, हाफ प्लस 1 माइनस हाफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर मीन्स व्हाट, x इंटू 1 माइनस 2x, ओके. समझ में आ रहा है आप लोगों को. इसमें देखो, ये जो चीज़ है उसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन किया जाए, दिस इज ऑफ द टाइप पी एक्स प्लस क्यू, दिस इज पी एक्स प्लस क्यू मीन्स व्हाट, 1, एंड दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस इज कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस इज ए लीनियर फैक्टर, दिस इज ए वन लीनियर फैक्टर, दिस इज अनदर लीनियर फैक्टर, अंडरस्टूड. सो ये लीनियर फैक्टर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, तो उसको क्या लिखते हैं हम, ए बाई x minus a plus b by, I'm sorry, a by x by b by 1 minus 2x, we can write this, और उसके साथ तो हाफ है. So this particular expression can be written as, this particular expression directly can be written as 1 minus x square by x minus 2x square is equal to what, half plus a by x plus b by 1 minus 2x. समझ में आ रहा है. डिवाइड करने के बाद एक हाफ मिल रहा है, और इसके बाद जो एक्सप्रेशन हो रहा है ये क्या हो रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है, प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन हो रहा है. तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दिस वे, बाय द फास्ट रूल, बाय द व्हाट, फास्ट रूल. एंड हाफ तो है, हाफ प्लस दिस. सो इन सच केसेस व्हाट वी विल डू, वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये पार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगी. तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं और एक एग्जांपल दे दूँ आप लोगों को, जैसे सपोज है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई सपोज दैट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा अगर मिल गया सपोज दैट आपको. सो इसको कैसे करेंगे, हाउ यू विल डू, ओके, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. तो व्हेन वी डिवाइड दिस टर्म बाय दैट टर्म, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगी, 1 आएगी, मैक्सिमम रिजल्ट 1 आएगी. 1 आने के बाद क्या होगा, बाद में जब करेंगे तो इसमें एक लीनियर फैक्टर आएगी, और 1 प्लस लीनियर, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगी 1 प्लस लीनियर डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस लीनियर डिवाइड बाय दिस फॉर्म में वी कैन राइट a by x minus 1 and b by x plus 3. Okay, so in such type of expression what we will do, we just think of the coefficient of x square term, coefficient of what, highest power of x, उसको हम देखेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, उस हिसाब से हम जो सपोज एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद रिजल्ट कितना आ गया, हाफ आ गया. अगर इधर 2 रहता तो क्या होता,
तो 2x² हो जाता, तो डिवाइड करते इसमें क्या आता, हाफ आ जाते, तो हाफ प्लस ए, बाकी लीनियर डिवाइड बाई ऐसा होगा ट्वाइस एक्स। ठीक है, इस टाइप में लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स प्लस 3, हाफ प्लस a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई ट्वाइस एक्स प्लस 3। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन मिले तो आप x² का जो नीचे जो टर्म होगा उससे ऊपर में जो x² है उसको डिवाइड करें, जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट इधर लिखे, और इसके बाद जो भी हो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दें। ठीक है, नो नीड टू डिवाइड एंड डू ऑल द थिंग्स। क्लियर? So what we will do here, it can be written as, now we can write 1 minus x² उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख लें। इधर क्या हो रहा है, x इंटू माइनस 2x, माइनस 2x², माइनस 2x² से x² डिवाइड करो तो क्या हो रहा है, हाफ आ रहा है, हाफ प्लस जो एक्सप्रेशन होगा लीनियर डिवाइड बाई ये होगा, लीनियर डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, a बाई x plus b by 1 minus 2x we can write. Okay, after dividing this term by this means we are dividing by the coefficient of x² with the coefficient of x² in the numerator. नीचे जो x² है डिनोमिनेटर में जो x² का coefficient है, I am dividing the coefficient of x² in the denominator to the coefficient of x² in the numerator. What is the result we get? Half. Okay, and other term will be linear divided by this one, which can be written as in this form. Clear? Now we take LCM. This constant term में LCM में नहीं रहेंगे, LCM will be taken from these two term, x into 1 minus 2x, because our aim is to make this denominator and that denominator same. अगर हाफ 2 ले लेंगे तो इसमें 2 आ जाएगी तो मुश्किल होगा, तो कांस्टेंट को थोड़ा सा बाहर रखेंगे। तो व्हेन यू टेक एलसीएम तो क्या होगा, हाफ इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू 1 माइनस 2x प्लस a इंटू वाट, x छोड़ के ये होगा 1 माइनस 2x एंड b इज इक्वल टू वाट, b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फाइनली न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस x² लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या है, हाफ इंटू x इंटू 1 माइनस 2x plus a into 1 minus 2x plus bx. Okay, now our aim is to find the constant a and b. When we find the constant a, at that same time we have to make this term 0. उसको कैसे 0 कर सकते हैं, putting x equal to 0. तो पहले क्या करें, putting x equal to 0, what is the left hand side, 1, एंड इफ़ यू पुट 0x हियर, x का वैल्यू 0 पुट करो, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो क्या होगा, हेयर इट विल बी 0, अल्टीमेटली ये होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फाइनली a इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, नेक्स्ट पुटिंग, योर एम इज टू फाइंड द कांस्टेंट व्हाट b, सो योर एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक दिस टर्म 0, ये टर्म 0 करेंगे तो ये 0 होना चाहिए, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 मीन्स x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, हाफ, पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट, हाफ, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 माइनस हाफ होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 4 इज व्हाट, 3 बाई 4, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 3 बाई 4। और इसमें अगर ये देखिए, ये टर्म तो x इज इक्वल टू हाफ होने से ये 0 हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट हैपन, दिस टर्म बिकम्स व्हाट, 0, ये 0 हो जाएगा, एंड दिस टर्म ऑल्सो 0, एंड नाउ b इंटू हाफ, फाइनली b क्या होगा, हाफ कैंसिल होगा, 3/2। ओके, b इक्वल टू व्हाट, 3/2। एंड नाउ योर इंटीग्रल्स, योर फाइनल इंटीग्रल इज व्हाट, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b you will solve this integration. Okay, now therefore integral 1 minus x² by x into 1 minus 2x dx, हाफ एक दिस हाफ इंटू इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ तो बाहर आएगी, इंटीग्रेशन क्या होगा, dx होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू व्हाट, 1, सो 1 बाई x, इंटीग्रेशन 1 बाई x dx, and what is the value of b equal to what, 3/2, it will be come out, so it is integration dx by what, 1 minus 2x. Okay,
Now half integration dx means what? X. Integration 1 by x dx is what? Log modulus x. Okay. And 3 by 2 log modulus 1 minus 2x. But here is the very interesting thing is that the coefficient of x is what? -2. तो आप ये कोफिशिएंट को कैसे करेंगे? -2 को 1 by -2 मल्टीप्लाई करेंगे. तो you have to write 1 by -2 here. Clear? Finally, your answer becomes x by 2 plus log modulus of x. तो उसको 3 by 4 log modulus 1 minus 2x इसमें c ऐड करो प्लस c. ठीक है. तो इस प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. पावर अगर सेम होगा तो आप क्या करेंगे? आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे जो डिनोमिनेटर में है उससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे. जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट लिखेंगे. इसके बाद बाकी जो 2 फैक्टर के वो 2 फैक्टर के हिसाब से 2 कांस्टेंट लगाएंगे. इफ देयर आर 3 फैक्टर what you will do? You will add another more constant. Clear everybody? So this is interesting. So I am going to solve another problems related to this concept. My aim is that you have to understand every step. When you understand, it will be very easy for you to solve any integral. And my advice is that practice lots in this particular that is integration part. Okay, to solve the problems of integration you have to clear your concept and also technique, and at the same time there is lots of practice is required. If you practice well, then you can make yourself perfect in this particular chapters. Okay, in this particular chapter integration. So a type of the integral I am going to discuss today. It is I'm considering a type, a particular type. So integral is integration dx by x into x to the power n plus 1 dx, sorry, or it may be integration dx by x into x to the power n minus 1. What is n? N is suppose any real number, okay, or you can say better to natural number. Okay. Now how to find this integration? So both the integration rule is same. Our main job will be in this type of integral what happen? Here x to the power n is there, so my aim is to make this x to the power n. How to make it x to the power n? Suppose x is there. How to make it x square? You have to multiply it by x and you get x square. Suppose x is there. How to make it x cube? By multiplying x square. Okay, you will get x cube. Now to get x to the power n, how to get? Multiplying x into x to the power n minus 1. तो अब जाके क्या होगा? x to the power n हो जाएगी. तो if you multiply denominator by x to the power n minus 1, so similarly you can multiply numerator by x to the power n minus 1. Okay, नीचे क्या होगा? x to the power n into x to the power n plus 1. Multiplying x to the power n minus 1 denominator and numerator. Okay. Now you can take any one of them. Is suppose you know that if you take derivative of this, उसका अगर derivative करेंगे क्या होगा? ddx of x to the power n क्या होगा? n into x to the power n minus 1. तो आपका ये टर्म आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए I'll use the method of substitution here. Take x to the power n is equal to what? Z. So n into x to the power n minus 1 dx is equal to dz, or x to the power n minus 1 dx equal to 1 by n dz. Yes, so this is simple steps. So 1 by n, जब x to the power n minus 1 dx इस जगह में 1 by n dz लिखेंगे तो 1 by n बाहर आएगी. So what will remain in the numerator? It will be dz, and it will be z, and this one z plus 1. So here I am going to use a very interesting fact, a short trick I am going to use. This is z plus 1. If you consider z equal to 2, then it will be 3.
If it is 3, it is 4. If it is 4, it is 5. That means both are consecutive numbers. Both are what? Consecutive numbers. So one example I am taking. So 1 by 2 into 3. So you compare this with, if you take z equal to 2, then z plus 1 equal to 3. So this type of, if numerator is 1 and denominator is a product of two consecutive numbers, then this type of expression can be resolved into a partial fraction like 1 by 2 minus 1 by 3. 1 by smaller minus 1 by greater. There are two numbers, smaller number is 2, greater number is 3. So you can write 1 by 2 minus 1 by 3. 1 by smaller minus 1 by greater. Remember 1 by smaller minus 1 by greater. आप एलसीएम लेके देखिए, ये होगा 2 इंटू 3 क्या हो रहा है 6 होगा, 3 माइनस 2 इक्वल 1 होगा कि नहीं. So this way you can resolve into partial fraction. We are not going to use lengthy process of 1 by z into z plus 1, a by z plus b by z plus 1 and find the constant and b. So here we are going to use the short trick. Okay. So here z and z plus 1 में कौन सा बड़ा है? z plus 1 बड़ा है. This is greater number, this smaller. So 1 by smaller number minus 1 by greater number. Okay. So your partial fraction done. Now, so separate the integral 1 by n. इंटीग्रेशन 1 by z क्या होगा? डायरेक्ट कर सकता हूँ log मॉडुलस ऑफ z. ठीक है. एंड इंटीग्रेशन 1 by z plus 1 is what? Log modulus of z plus 1. Okay. So which can be written as log a minus log b. This log modulus of z by z plus 1 whole modulus plus c. And 1 by n log, what is z? You have taken z equal to what? X to the power n by x to the power n plus 1 plus c. ठीक है? So this is the simple answer. Clear everybody? So the same process can be applied to the other integral also. Okay? You have to make a numerator, denominator में क्या बनाना है? x to the power n बनाना है. ठीक है? So some questions I just raise on you and you try and solve it. Like suppose the question, ऐसा question आ जाए, this one, this is one question. Okay. Another question, suppose this is another question. Okay. So try to solve this type of questions. So इसमें x to the power 4 बनाना है, इसमें x स्क्वायर है तो इसमें x स्क्वायर बनाना है. इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कीजिए तो आराम से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. Note down these two questions, note down and you try to solve these two questions. Okay, दोनों note down कर लो. Now I am going to solve a particular question which is very important, useful. Okay, like this question. I am just discussing the question. I am not going to solve this. तो उसको क्या करेंगे? पहले आप लोग फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके. Now in this particular integrand, what is your integrand here? Your integrand into what? 1 by x square plus 1 into x square minus 1. If you multiply this x, you are getting x to the power 4, and if the power of x is 4, means you are going to introduce how many constant? There will be 4 constant you are going to use, and which is difficult for you to solve the problem. So reduce the number of constant. What we will do, since only the x square term is present, so in this integrand what we will do, x square, we suppose that x square is equal to y, and reduce this particular expression is 1 by y plus 1. तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन करो तो क्या होगा? लीनियर हो गया ना, तो आराम से 2 कांस्टेंट में ख़त्म कर सकते हो. इसके बाद न्यूमरेटर इक्वल न्यूमरेटर करके आप क्या करो? कांस्टेंट a एंड b निकालो, कोई भी कांस्टेंट हो जाए. तो इसके बाद y का वैल्यू सिर्फ रिप्लेस करो. एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसमें एक्स स्क्वायर आएगी, इसमें एक्स स्क्वायर आएगी, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगी, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगी. इसके बाद इंटीग्रल ख़त्म करो. ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रल लिया करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके. So I hope you understand such type of problems I have solved in the last class. So follow this particular, there is a procedure of the problem. Okay, solving the problem.
So this is the question. Suppose question is a very interesting one. The question is x square plus 1 into x square plus 2 divided by what? X square plus 3 into x square plus 4 dx. ये इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एवरी टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, ओनली देयर इज ए वेरिएबल एक्स स्क्वायर टर्म इज प्रेजेंट, नो अदर देन टर्म एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर छोड़ के कोई टर्म नहीं है, ओनली एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट। सो इन सच केसेस you take, it is not a substitution method, you have to take x square is equal to what? Y. So your expression becomes what? Your integrand becomes what? This one. इसमें क्या हो जाएगी? Which is equal to what? Y plus 1 into y plus 2 divided by y plus 3 इंटू वाई प्लस 4। उसको हमने क्या किया, उसका पावर को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। नाउ सी न्यूमरेटर, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई? इट विल बी वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई? 2 वाई स्क्वायर होगा कि नहीं? तो दैट मीन्स व्हाट, मैं न्यूमरेटर का डिग्री एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, सो इट इज़ एन इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन, राइट। सो तो इन दिस इम्प्रॉपर रैशनल पोलिनोमियल फंक्शन व्हाट विल हैपन, हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट लास्ट प्रॉब्लम में मैंने एक टेक्निक बताया था, आप उसमें वाई मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर होगा, इसमें वाई मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर होगा। उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो सो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगी? 1 होगी। और इसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगी, ये प्रॉब्लम इस टाइप का होगा, लीनियर डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ऐसा हो जाएगी। एंड लीनियर डिवाइड बाई वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 क्या होगा? विच विल बी, आप लोगों को पता है, विच विल बी व्हाट? दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन बाय द फर्स्ट रूल, ए बाई वाई प्लस 3 बी बाई वाई प्लस 4, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, वो हो गया ना आपका। इसमें आपका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? वाई प्लस 1 इंटू वाई, आई एम सॉरी, न्यूमरेटर इज़ व्हाट? वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। और उसमें एलसीएम ले जाए 1 को छोड़ के, वाई प्लस 3 आपका एक्सप्रेशन हो रहा है ऐसे, वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। फाइनली एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 and numerator will be what? Numerator will be y plus 3 into y plus 4, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? एंड a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? a इंटू वाट? y प्लस 4 एंड b इंटू वाट? y प्लस 3, ओके। So what is the numerator in the left hand side? y plus 1 into y plus 2, and in denominator में numerator, right hand side में numerator क्या है? y plus 3 into y plus 4 plus a into y plus 4 plus b into y plus 3, okay. Now your aim is to find the constant a and b. समझ में आ रहा है? So putting y equal to -3, you will get the value of a. Putting y equal to -4, you get the value of b. दोनों में क्या होगा? ये टर्म 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? And accordingly you put the values and you will get some value of this. Your integral becomes what? ये ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। Okay, this is your original because we suppose that x square is equal to what? Y, and तो इसमें भी x स्क्वायर पुट कर लेंगे, फाइनली इसमें भी x स्क्वायर पुट कर लेंगे। तो you will get the value of a and b, उसका भी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके बाद उसमें इंटीग्रल लगाइए, तो इसमें भी इंटीग्रल आएगी dx, इंटीग्रल इसमें भी इंटीग्रल आएगी, ओके। and which will be x square plus root 3 whole square, it will be x square plus 2 square. So what formula we are going to apply? The formula is integration dx by x square plus a square, which is equal to 1 by a tan inverse x by a.
आ रहा है कि समझ में आप लोगों को? सो दिस इज इजी क्वेश्चंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अगर विदाउट प्रैक्टिस यू वन एक दो बार किया तो याद में नहीं रहेगा, 2-3 मिनिमम 4-5 टाइम्स यू प्रैक्टिस इट and then what happen, you will make yourself expertise in this type of problem. So hope I make you understand, and already I have solved a few questions related to this particular topic, and it was very nice questions, and I hope you all understand. For some question I have just given you hints, and a few question I have given you as a homework, and please do so, and if any doubts is there, and you can send me through your in the particular comment box that I have this problem, so or this particular part I have I do not understand, so I will reply accordingly. Okay, so or I will prepare another video on this particular class such that you can make understand. Okay, in the next class I will start what integration by parts, very important. Okay, very important topic I am going to discuss. So all there, I request all my viewers that please subscribe my channel, also share my videos such that maximum student can be benefited, and also press the bell icon such that जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.